Hello everyone, I am Megha Pathak from Arden Progressive School, your bio teacher. Children, as you know that we are revising the chapter, so from today onwards, we are revising the chapter Why Do We Fall Ill? And in this video, we will learn about principles of prevention, we will learn about immunization, vaccination. Okay, so let's begin with it. So first we will learn about principles of prevention. Children, we have discussed in previous videos like infectious diseases can be cured by using antibiotics, okay, and medicines. So but still there are some limitations of infectious diseases. And what are these? First limitation is once someone has disease, his body functions are damaged and may not recover or may never recover completely. देखिए, अगर एक बार किसी व्यक्ति को infectious disease हो जाती है, so there are chances that his body never recover completely. हो सकता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर ना कर पाए. Okay, and the second limitation is the treatment will take time. There are some infectious diseases, their treatment takes time, like tuberculosis के treatment में समय लगता है. And there are other infectious diseases also whose treatment takes time, and the person maybe he is bedridden. हो सकता है उसको bed rest बोला जाए and he is bedridden. Okay, and the third limitation is the person, means the diseased person, can serve as the source of infection to healthy people. Okay, so this is a big limitation. Like the current example is corona. That is why we are using mask and sanitizer, because if a person is suffering from corona, he can act as a source of infection to healthy person. Okay, so these are the limitations of infectious diseases. And now we can say that prevention is better than cure. Why? Because if we are careful and if we follow the preventive measures, so we can keep ourselves protected from infectious diseases. Now, children, let's understand methods to prevent diseases. So, there are two general ways to prevent diseases. And what are these ways? First is general ways to preventing infectious diseases. These ways are mostly related to prevent exposure to infectious microbes. And public hygiene is also necessary for the prevention of infectious diseases. देखिए जनरल वेज में सबसे पहले जो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स है उसका एक्सपोजर रोका जाता है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है पब्लिक हाइजीन. सी वी कैन प्रिवेंट एयरबॉर्न डिजीजेस बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड एंड वाटरबॉर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन. देखिए अगर आपके पास कोई फ़िल्टर नहीं है, आरओ नहीं है, तो जो पीने का पानी है अगर वो साफ़ नहीं है उसे हम बॉयल करके भी पी सकते हैं. एंड वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट विच would prevent breeding of mosquitoes because mosquitoes are the vector of different diseases like malaria and dengue. And children, there are some other general principles also for the prevention of infectious diseases. Like first is strong immune system. See, the immune system of our body fights against the microbes that enter into our body and it kills them. If the immune system is successful, we do not actually come down with any disease. देखिए अगर हमारा immune system strong है तो जो infectious agent है अगर ये हमारी बॉडी में एंटर भी करेगा तो हमारा immune system उसे मार देता है और इससे हमें वो बीमारी नहीं होती है. And the cells of immune system kill off the microbes before it can take on major proportions. And the second way is balanced diet. Immune system will not function properly if sufficient amount of food and nourishment is not available. देखिए अगर हमें बैलेंस डाइट सफिशिएंट अमाउंट में फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं अवेलेबल होंगे तो हमारी बॉडी डिजीज से नहीं फाइट कर पाएगी. Therefore, availability of proper and sufficient food for everyone is the second basic principle of prevention. So children, good diet, hygienic habits,
clean environment, balanced diet, clean air, water and food, habits of exercise, habit of non-consumption of alcohol and drugs confirms good health of an individual. And there are specific ways of preventing infections. So these are methods to strengthen body's immune system so as to check the occurrence of microbial infection. And the property is called immunity. And the other method of developing immunity is called immunization. So what is immunization? Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine. See children, when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time when that particular microbe or its close relatives enter the body, the immune system responds with greater vigor and it eliminates the infection more quickly than the first time around. And this is the basic principle of immunization. So vaccination is the process of injecting dead microbes in the body of a healthy person in order to develop immunity against a particular disease caused by that microbe. देखिए वैक्सीनेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में डेड माइक्रोब इंजेक्ट कराया जाता है, चाहे हम उसको ओरली दें या फिर हम उसे इंजेक्शन के थ्रू दें. और इससे क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में उस पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है. एंड दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the body develops a memory of the particular infection by putting something into the body that mimics the microbes we want to vaccinate against. और देखिए इससे इन्फेक्शन कैसे दूर होता है, क्योंकि जब वो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, बिकॉज इट इज़ इन डेड स्टेट, इट इज़ नॉट अलाइव, और उससे इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी उस इन्फेक्शियस एजेंट को याद रखती है और उसके अगेंस्ट लड़ने वाले फाइटर्स बना लेती है. और इससे फ्यूचर में अगर कभी वो इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में दोबारा से अटैक करता है तो हमारी बॉडी में उससे लड़ने वाले फाइटर्स पहले से ही मौजूद हैं, जिससे वो हमें बीमारी फ्यूचर में नहीं होती है. So children, what is vaccine? Vaccine is a preparation of weakened or killed infectious agents or their products, and they stimulate the immune system to produce antibodies against particular disease. And the first vaccine was discovered by Edward Jenner against smallpox disease. And there are many vaccines available for preventing infectious diseases and provide disease specific means of prevention. And these vaccines are DPT. This vaccine provides immunity against diphtheria, pertussis, tetanus. And OPV. OPV means oral polio vaccine. It provides the immunity against polio. And hepatitis vaccine, which provides the immunity against hepatitis B. BCG or Bacillus calmette-guerin. It provides the immunity against tuberculosis. And these vaccines are available under child immunization program for preventing infectious diseases. Vaccines has to be provided at proper age. For example, a vaccine against hepatitis A is available in the market, and hepatitis virus causes jaundice and transmitted through water. It is useless if its vaccine is given after 5 years of age, because by that time one has contracted an infection and has become immune to the same, because its virus enters in our body through contaminated water, and this is because they are exposed to the virus through water. देखिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये एक प्रॉपर एज में होता है. फॉर एग्जाम्पल जो हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस जिसकी वजह से
पी लिया होता है और ये हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू एंटर करता है। तो इस वैक्सीन को 5 साल से पहले देना सही रहता है। क्यों? क्योंकि 5 साल की एज तक बच्चा हो सकता है उसने जो कंटामिनेटेड वाटर है वो उसने कंज्यूम किया हो और उसके बॉडी में फिर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बट चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द चिल्ड्रन देयर बॉडी इज़ इम्यून टू फाइट अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस, क्योंकि कुछ बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव वीक इम्यून सिस्टम, और जिन्हें अगर ये वैक्सीन नहीं लगती है तो उन्हें जॉन्डिस हो सकता है। And there is one more important immunization program which is launched in India in 1995, and this is Pulse Polio program. Under this program, all children under 5 years are given 2 drops of oral polio vaccine. देखिए, पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 में इंडिया में लॉन्च हुआ था और इसके अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, जिससे उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। एंड यू नो चिल्ड्रन, India has been declared polio free by WHO, but still Pulse Polio program is continuing to eliminate any chance of its comeback.